An India Today exclusive on Pakistan's jihadi jains after India struck Muridke and Bahawalpur, the headquarters of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammad. Pakistan, through its terrorists, is trying to hit back. Now more than 100 terrorists died. The top terrorists are in hiding, so now they're training women in burqas to target India. Listen to that video. It's an India Today exclusive, how they're indoctrinating women in Pakistan to target India and Prime Minister Narendra Modi. Arvind Ojha with this India Today exclusive. A chilling new face of terror has emerged in Pakistan. Terror groups like Lashkar-e-Taiba are now recruiting and training women, turning them into jihadis. Exclusive footage show how they are being taught a syllabus portraying India and Prime Minister Narendra Modi as their biggest enemies. इस वक्त आपकी जमात का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोदी है, वो इंडिया है। तो मरकज तैयबा मरीज के पे होने वाला ये अटैक इस बात की दलील है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से भी हम इंशाअल्लाह ताला जिहाद का काम ही करेंगे और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। This US designated global terrorist, Hafiz Abdul Rauf, leads live online sessions from Lashkar's training centers in Sialkot, brainwashing women to take up jihad. Rauf, known for leading funeral prayers for terrorists in the presence of Pakistan Army officers, is at the heart of this new terror agenda. These videos expose Lashkar's growing network of civil and political fronts disguised as social and empowerment groups, used to recruit, train and radicalize women and youth. Disturbingly, intelligence sources say Pakistan Army and police officers are involved in these so-called empowerment programs, providing both tactical and ideological training. After India's Operation Sindoor, terror groups in Pakistan are innovating, turning women and youth into new faces of jihad, a grim new chapter in terrorism. Bureau Report, India Today. India Today's Arvind Ojha now joins me with the latest. Also with me is Yashovardhan Azad, former Special Director of India's Intelligence Bureau. Arvind, किस तरह से इन महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है? आखिर कौन है ये महिलाएं? ये जिहादी कैंप में क्यों आ रही हैं और पैसा देकर आ रही हैं? इनको क्या सिखाया जा रहा है? देखिए गौरव, ये पाकिस्तान की आम महिलाएं हैं जिन्हें वर्कशॉप के नाम पर ये सिखाया जा रहा है कि आपका दुश्मन इंडिया है, नरेंद्र मोदी हैं। तो ये एक अलग तरह की वर्कशॉप है जिसमें लोगों को जिहादी बनाया जा रहा है। इन महिलाओं को महिला फिदाइन बनाने की कोशिश की जा रही है और ट्रेनिंग देने वाले कोई और नहीं बल्कि दो ऐसे आतंकवादी हैं, कुख्यात आतंकवादी, जिनको अमेरिका तक ने बैन कर रखा है। अगर आप तस्वीरों में आपने देखा होगा, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये चेहरा कोई भूल नहीं सकता। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत ने, तब कैसे हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर नमाज जनाजा पढ़ रहा था। उन आतंकियों में, जो आतंकियों के नमाज जनाजा में शामिल था, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। तो अब लश्कर ने एक अपनी महिला विंग भी बनाई है जिनको यहाँ वर्कशॉप के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और So women suicide squad, you say. Stay with me. Yashovardhan Azad, how serious is this threat of women jihadis or women suicide bombers, sir? Well, this is a very, very chilling news which you have given. And I think it has two critical dimensions. One is, of course, VIP security. And in VIP security, I'm referring to the Prime Minister, because now you see, Gaurav, almost everyone, whether it is Bhutto or whether it is any Munir, anyone is referring to the Prime Minister and talking in terms of actual threat. So with the women suicide bombers getting in, it has a very critical dimension. You know what happened to Rajiv Gandhi. So I hope the security agencies are taking it very, very seriously. Now, the other thing is that it's extremely important because it changes the entire terrorist and their incidents which will create. For example, the Palestinians used, I checked my notes, and the first one, which was Wafa Idris, I think a Palestinian,
who blasted herself in central Jerusalem. There was another one. We've also had examples of the black widows of Chechens who bombed the Moscow metro underground station. You have the Boko Harams. So, therefore, I think slipping in these burqa clad women would be easy. There's only one thing to say here, that most of these black widows or these bombers who have been used, as you rightly said, they were subjugated, they were pressurized, and they were under severe threat. And that is why these kind of, they were, motivated to do this. I think अरविंद, इनको this is. भारत लाया कैसे जाएगा? ये जो महिलाएं हैं, ये भारत कैसे आएंगी? Let me try and reestablish that link with Arvind in just a moment, because terrorists sometimes have to cross through difficult areas to infiltrate into India. Now that there's a fence along 500 of the 770-kilometer long line of control, will these women preferably take that Nepal route or some other route, or perhaps through Bangladesh, infiltrate into India? They could target schools, they could target marketplaces, they could target temples, they could create chaos in India. You see, Gaurav, I mean, these routes are already available, which you have talked about. The ISI is extremely active now in Bangladesh after the new regime has taken over. In Nepal, there is a lot of instability. So obviously, ISI is going to exploit this. And therefore, if they are able to somehow send them, or even indoctrination across the border. Now, these are issues which have to be looked into very, very seriously. And also, because of the assistance which the Pak ISI is already giving to both LeT and JEM in shoring up and their infrastructure, making those mosques. So more and more of these indoctrination programs will go on. And therefore, it's extremely important to keep this in mind and to bolster our defenses, both in the area of VIP security and also these routes which we have to watch. These the intelligence agencies would have to keep in mind. My other fear, sir, is if I take you back in history, the Batla House encounter in which we lost brave Inspector Mohan Chand Sharma, the local terrorists who were indoctrinated, Indian Mujahideen, the Azamgarh module, the Batla House module, they could indoctrinate locals here online and, God forbid, try and use them. How does one guard against this threat? No, absolutely right. And this is exactly what I said, indoctrination across the border, because there are already these schemes over the internet where people, in fact, if you remember, ISIS was doing it very, very frequently in trying to get people to go there. And many of them we had interviewed from Kerala who had gone. Some of them had come back, some were killed, and some were right there. So this is extremely important, and the watch should continue. It's there are various ways of doing it. I think there are certain areas which are already under notice. The IPF which was there and was creating a kind of a mayhem in the entire country, especially in the south. They've already been banned, and there are many of these remnant units from the so-called earlier terrorist organizations. They need to be kept under watch. And yes, this is going to be an issue which needs to be looked into very, very seriously. अरविंद, भारत ने जब लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय मुरीदके को निशाना बनाया था और जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर को, तो कहा यह गया था कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और कई आतंकवादियों की पत्नी वो विधवा हो गई थी। वो क्या इस ग्रुप में है, जैसे वो ब्लैक विडोज थी? क्या इस तरह का खतरा भी है? और ये भारत आएंगी कैसे? क्या नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा? क्या पता चल पा रहा है? देखिए गौरव, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो में जो ये इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है, तो इसमें जिहाद की पाठशाला तो चलाई जा रही है जिसमें नया सिलेबस है कि इंडिया और मोदी हमारे दुश्मन हैं। लेकिन इसमें आप इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कन्फेशन भी है। जो मोस्ट वांटेड आतंकी है वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर की कमर पूरी तरह से टूटी है,
इस बात से, ये बात कम से कम इस वीडियो से साबित होती है। लेकिन उसकी आड़ में अब उसी मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर चल रहा था, जिसे ध्वस्त किया गया था, उसकी आड़ में ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि दरअसल ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये हमारी तंजीम के खिलाफ लड़ाई है और इसके लिए जिहाद करना पड़ेगा। ये महिलाओं को सिखाया जा रहा है। इसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें कई पढ़ी लिखी, कई वेल एजुकेटेड है, और न सिर्फ इनको अलग अलग रूट से भारत भेजने की प्लानिंग होगी, बल्कि ऑनलाइन ये जो रिक्रूटमेंट चलाते हैं पढ़े लिखे लोगों को, पहले भी इस तरह के इंटेल आया था कि जो आतंकी तंजीमें हैं, आतंकी संगठन है, वो सोशल मीडिया के जरिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस तरह की महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया के जरिए भी ये आतंकवाद फैलाएंगी, और ऑन ग्राउंड तो फैलाएंगी फैलाएंगी, क्योंकि जिस तरह की इस वर्कशॉप में जो कुछ सिखाया और बताया जा रहा है वो तो बेहद खतरनाक है। ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। और The ये जो jihadi Jains of Pakistan, these burqa-clad women terrorists who are being indoctrinated by Lashkar-e-Taiba terrorists, including Abdul Rauf, visible on camera. Their audio can be heard, the video can be seen.